Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. रिया आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम फॉर सम टाइम. ठीक है, अभी ओइशी का पहले वाइवा ले लेना है, इसका एग्जाम है, उसके बाद आपका होगा. ठीक है. ओके, तो आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम. ओके ओइशी, so you can turn on your video and you can turn on Okay. okay, so okay, let us say there is this reaction 2a plus 3b gives 4c plus d. Okay, at t equal to 0 you have a naught, b naught, 0 0. Okay, at t equal to t, what should be the concentrations a b c d? Sir, A naught. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, A naught minus 2x. Then B naught. 2x, B naught minus 3x. minus 3x, And 4x and x. 4x and x. Okay. Okay. Then for a first order reaction, let us say this is a first order reaction. Let us say the rate of reaction is K into concentration of A. Okay. So you have to tell the concentration of A with respect to time. Can you draw on the screen? Sir, how to draw? You can just touch the screen. Achha, you are with your laptop? Yes, sir. Okay, you can use your mouse or something. 1 second, let me give you the permission. Now you can draw. Sir, can I draw in my copy and show? You can draw, but that will be easier now. You are not able to draw on using your mouse. नहीं sir, I'm using laptop. Mouse नहीं connected है. अच्छा, टच पैड नहीं है आपके लैपटॉप में? हाँ है, पर कैसे करूँ sir? I've never used it. टच पैड पे बस ऐसे डबल क्लिक करके ऐसे करके. अच्छा, एक मिनट sir. A versus Sir, 1 minute. I'm just recording the class. Sir, can I draw in my copy and show? Okay, you draw. Do it quickly. Sir, will it be like this? Okay, fine. Okay, so this is, can you tell me the expression how this is decreasing with respect to time? What is the function? What is the relation between A and T? Sir, sir, A is A T, at the time T is A in A naught, initial concentration into e to the power minus kt. Okay. Okay. Then what is the formula of T half for first order reaction? Sir, ln2 by k. ln2 by k. What is the value of ln2? 0.6. 0.6 exact value? I don't know, sir. Okay. Then okay, can you tell me some examples of first order reaction?
Sir, Don't remember? no, sir, can we have the pseudo first order reaction examples over here? Mm, okay, pseudo first order, you give some examples. Sir, that was acidic hydrolysis of ester and inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar, okay. Correct. Then, okay. So I'm giving you a numerical. This is the last question. So this is some parallel reactions are going on. And the coefficient is K, rate constant. Here the rate constant is 4K. This is A2. Then A3, the rate constant is 9K. Okay. Like this, there are n products. This rate constant is n square K. So we have to calculate first K effective. Second thing is T half. Just quickly do it on your notebook and tell me the answers. Just tell the answers. Sir, that K effective will be K plus 4K plus 9K to n square K into A, concentration of A. No, K effective will not have concentration of 8 as, right? No, concentration of A not there. Hmm. So what will be the value of this? You know the formula of summation n square? In maths you have heard it. Hmm. What is n square? Tell me the final answer. Sir, I don't remember the formula. Don't remember. Okay. What about this one? Try to solve this one. Sir, this will be. Hmm. Sir, can I tell like 1 by T half will be. 1 by T half. 1 by T half will be equal to that 1 by T half of the first one, then 1 by T half second one till n. 1 by T. Okay, what will be the expression? 1 by K plus 1 by 4K plus 1 by 9K plus, is it? No. T half will be ln2 by K, right? Okay, So ln2 K plus okay. 4K plus 9K, something like this. And you can solve it like this also. ln2 upon K effective. Okay. Okay, sir. Okay, you can leave also. Yes, sir, that one doubt I had. Can I tell? Sir, Hmm. one example you had given that 2HCl breaking into H2 and Cl2. Sir, in that example, you're told that this is a zero order reaction, but you had given that example in those that elementary reactions example also. Elementary reactions have that molecularity and order same. Achha. You just take a screenshot and you send it. Okay, sir.
Thank you, sir. Okay, you can leave. Hello, Ria, you can turn on your mic and video. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you? Fine. Okay. Okay. So, okay. So, first question. So, tell me what is the difference between transition state and transition state and intermediate reaction intermediate. You know this? Sir, transition state is a state achieved during reaction by gaining some energy, and intermediate Intermediate. reaction intermediate is sudden. Okay. So, let us say here you have an energy profile diagram. Okay? This is a energy profile diagram. So, what is there on x-axis and what is there on y-axis? You have seen curves like this. Yes, sir. So, what is on y-axis and what is on x-axis? So potential energy and Potential energy and space transition. no. What is there on the x-axis? See, this is a reaction path. Okay? Oh yes, sir. Our reaction is progressing. Okay, what is this point and what is this point? You have not revised anything. So I have revised, but this part is not What is not? getting out of it. This is the most basic question. ये activation energy जब हम पढ़ा रहे थे तो I spent a lot of time explaining all these. ये activation energy कैसे calculate? Transition state. हाँ, this is what? Transition state. This is the transition state. Okay. This is the first transition state. This is the second transition state. Okay. So what is this and what is this? These two things. See, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा reactant होता है, ठीक है? और ये हमारा क्या होता है? Product बनता है. You're able to understand? तो यहाँ से हमारा reactant शुरू होता है, बीच में कुछ एक intermediate बना, तो that is how this reaction is progressing, ठीक है? X axis पे हम लोग reaction path show करते हैं. तो हम लोगों ने शुरू किससे किया? सिर्फ reactant से, फिर ये बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ एक transition state बना, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक और ट्रांजिशन स्टेट बना, और इस तरह फाइनली हमारा क्या हुआ? रिएक्शन प्रोडक्ट्स तक पहुंचा, ठीक है? सो दैट इज हाउ दिस रिएक्शन पाथ इज देयर. तो रिएक्टेंट से शुरू करते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, बीच में ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस ओनली इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. See, the point of this YY is not to intimidate you कि आपको कुछ आता नहीं है. Point is to make you clarify things. आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या कैसे हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? ये ट्रांजिशन स्टेट है आपका, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? ट्रांजिशन स्टेट आपका थोड़े देर के लिए बनता है, ठीक है? उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दैट इज समथिंग थ्योरेटिकल, ठीक है? रिएक्शन इंटरमीडिएट इज समथिंग दैट इज स्टेबल. यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी कम है इसकी. पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो क्या होता है? चीजें स्टेबल बनता है, राइट?
So that is how this reaction intermediate is taking place. Okay, anyways, this is something I think I had not taught in class. तो चलो ठीक है, और कुछ पूछते हैं आपसे. Okay, you tell me what is the T half for a first order reaction? Sir, 0.693 by K. Very good. Okay. अगर okay, टेम्परेचर T1 पे आपका रेट कांस्टेंट है K1, ठीक है. टेम्परेचर T2 पे आपका रेट कांस्टेंट K2 है. तो इस दोनों में क्या रिलेशन होगा K1 K2 और T1 T2? कौन सा इक्वेशन है जो इसको रिलेट करता है टेम्परेचर को K से? Sir, rate R equals to A e to the power minus EA by RT. R equal to A e to the power minus EA by RT. नहीं, R equal to नहीं होता है, K equal to होता है. K equal to A. अच्छा ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया. तो फिर आप एक लॉग वाला रिलेशन होता है ना, लॉग ऑफ K1 अपॉन K2, ये क्या होता है? आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया है रिया. ऐसे कैसे चलेगा, बोलिए. ठीक है, आप ये फॉर्मूला रिवाइज कर लेना. और ओके, लास्ट क्वेश्चन देन विल एंड. तो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड से, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड का आपने नाम सुना है? तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, कहाँ चली गई? ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यूज दी हुई है t इक्वल टू 0 पे r0, t इक्वल टू t पे rt और t इक्वल टू इंफिनिटी पे r इंफिनिटी. तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होता है? k ln R infinite minus R naught by ln of R infinite minus R r naught infinite minus r naught by R infinite minus RT. r infinity minus rt. ओके, वेरी गुड. कुछ इसमें मिसिंग है, लेकिन बताइए क्या मिसिंग है? Sir, 1/T. 1/t, ठीक है. तो एग्जाम में भी क्या करना है, इसी तरह से 1/t मिस करके आ जाना, ठीक है. ओके, चलो ठीक है, यू कैन लीव नाउ. श्रीनिवास कार्तिक, तो गूगल जो है ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल डॉक्स है, CPP. बहुत यूजफुल है. गूगल डॉक्स जो है ऐसे गूगल कैलेंडर जो गूगल फॉर्म्स है, गूगल अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है एक पीपीटी फाइल जो है तो इसमें हम कोई प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी होता है. तो गूगल प्रेजेंटेशन ये फाइल को शेयर कर सकते हैं. तो जिन यूजर्स के साथ हमने शेयर किया है इसमें हम एक्सेस का भी सेटिंग होता है, ठीक है, कि रीड ओनली या मॉडिफिकेशन ताकि हम एक्सेस दे सकते हैं. तो ये शेयरिंग सर्विस है, ठीक है. हेलो तो इसमें हेलो श्रीनिवास, भी लास्ट टॉपिक है यहाँ पे. ये श्रीनिवास कार्तिक कौन है? इसमें आप लास्ट तो मेरा है भाई. वैष्णवी, अच्छा. अब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए वैष्णवी. ओके ओके. तो वैष्णवी, आप मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A is getting converted to B, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया है आपके पास K into concentration of A, ठीक है। तो आपको बताना है concentration of B with respect to time, ठीक है। सर इसका कैपेसिटर के चार्जिंग की तरह होगा, 0 से शुरू होगा और एक टाइम पे इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करो आप एक बार, माउस का यूज करके कर सकते हैं, माउस या फिर टच। ओके, वेरी गुड, ठीक है। देन से शुरू होगा, हाँ, ओरिजिन से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, concentration of A versus concentration of B, ये ड्रॉ करो। सर एक सेकंड। सर ऐसे कुछ दोनों में मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, concentration of A और concentration of B में? सर concentration of A is 1 by concentration of B। Is it concentration of A is 1 by concentration of B? मतलब दोनों इन्वर्स। ऐसे सर concentration of A मतलब AT या AT? AT and BT। अच्छा, तो थोड़ा टाइम। करिए करिए। सर ये ऐसे होगा, ये इरेज कर। एक मिनट, इस पे ड्रॉ करो आप, concentration of A आपका है is equal to A naught into 1 minus e to the power minus kt। क्या? concentration of B is equal to A naught into 1 minus e to the power minus kt। minus KT, ठीक है। Okay, what I am asking you is concentration of A at time t versus concentration of B at time t. You have to draw a relation between these two. I'm not asking this relation with respect to time. अच्छा, आपका भी यही डाउट था ना, आपने पूछा था rate of if A is decreasing then why the graph is increasing. So this question is related to that only. अगर if that point is clear to you, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अच्छा। सर पूछ सकते हैं? कैसे ड्रॉ करो इस पे? नहीं, कैन वी कम बैक टू दिस आफ्टर सम टाइम? आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, then okay, so you remember this optical rotation method we studied? Optical rotation, monitoring the progress of reaction using optical rotations. बताइए, you remember this? Somewhat, sir.
Okay. What is the expression for K here? What is the relation between K and T? If let us say this data is given at t equal to 0, the angle of rotation is r naught. At t equal to t, angle of rotation is rt. At t equal to infinity, it is r infinity. So what is the relation between all these four parameters? Sir, I don't know. You don't know. Okay. Then okay, you tell me this relation. If at temperature T1, the rate of reaction is K1, and not rate of reaction, rate constant. Okay? At temperature T2, rate constant is K2. What is the relation between K1, K2 and T1, T2? There is some expression like this: log of K1 upon K2 is equal to. Yeah. Okay. What is the relation? One second. Sir, should I can also use activation energy here. Yeah. No, activation energy is not there in this equation. Some other term is there. You are preparing for JEE or NEET? J. JEE. And like this you are preparing. These are basic formulas. JEE will, the questions will be much more tough than this. Have you solved that sheet? आपको जो sheet भेजा था पूरा किया हाँ. आपने? Okay. You need to do more practice. ठीक है? You are following some book or something. सर केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो आप देते हैं बस वो. अच्छा, okay. You can And purchase. नरेंद्र अवस्थी. Narendra Avasthi you are solving? Yes sir. Okay. ये kinetics किया है आपने उससे? नहीं सर अब तक नहीं किया है. वो स्कूल के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वो कर. Okay, okay. चलो ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करो. यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस. ये सब दिस बेसिक फार्मूला यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर. ठीक है? ओके, यू कैन लीव नाउ. सर इसका आंसर. किसका आंसर? सर ये K1/K2 का. हाँ, ये होता है ना डेल्टा एच अपॉन 2.303 r into 1 by t 2 minus 1 by t. ठीक है? And this graph also. अच्छा ठीक है, ये ग्राफ आप सॉल्व करके मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे. ठीक है? ठीक है सर. चलो ठीक है, यू कैन लीव. Hello Avingshu, you can turn on your mic and video. Sir, actually my internet is buffer means very slow, so I have to on my camera. Yes, you can on. Okay. Okay. So Avingshu, here is a question for you. This is the reaction. A is getting transformed to B. The rate of reaction is K into concentration of A. Okay. So you tell me what is the relation between concentration of A versus time. Okay. This graph you plot. Plot and you can plot on the screen actually.
Okay. So concentration of A is going to decrease with time, right? This. Okay. Okay. What is the graph of concentration of B versus T? It will be increasing. Like this. No, yes, You can draw on the screen. okay. Okay, you can draw it again. So can you wait for a while? Why? What happened? Uh, I have actually a pen which I can use to draw. Means if you have any problems. Okay, bring it quickly. Okay. So it is going. You have drawn a straight line, right? No, sir. Increase means irregular increasing curve, not a straight line. Irregular, not a straight line. Okay. So it is a Yes, sir. parabola. Yes, sir. It is a parabola. Are you sure? Parabola means it is going to get increasing like this. So after infinite time, what is going to happen? Concentration of B will be infinite. As time will tend to infinity, concentration of B will not be infinite. So there Yes, is sir. something wrong in this. So what is wrong? You don't know this? Okay, you tell me the expression for this concentration of B versus time. What is the expression? What is the value of this function? Concentration So of it B will at be D equals sorry dB equals to R dt. dB is equal to R dt. Yes, sir. You integrate this and you tell me the final expression. What is B at time t? You can do it on your notebook. Just tell me the answer. So is it straight line? Straight line. So concentration of B will be something like KT. Straight line. Again, same problem. Yes, sir. What will be the value at t in equal to infinity? It will be infinite. Again. Hmm. So concentration of B will be infinite after infinite.
Okay, next question. I'm erasing it off. Let us say you have a equation ln k is equal to 5 minus 20 by t. Okay, and let us say this is in calorie. So you tell me from this expression, what can you tell about activation energy and Arrhenius factor? Acha, first of all, tell me what is Arrhenius equation? आपको Arrhenius equation नहीं याद है? आपने क्या रिवाइज किया है विंशु? आप किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई का कि नीट का? बोलिए बोलिए। जेई का ऐसे होता है, जेई का प्रिपरेशन। आर्हेनियस इक्वेशन आपको पता नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ नहीं कर पा रहे हैं,